जल्दी से बैठो। कंबाइनिंग। एवरीवन सेटल डाउन फॉर। बेटा जल्दी से जो बैठे हैं वो तो सेटल हो जाओ। यू टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। सो अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्टिविटी। हम फिर से एक्टिविटी से ही करेंगे, ठीक है। So now here in my activity table, let's again moving to the activity table here. So let me bring it here close to this. Yes, so now it is pretty close. Yes. So now here you can see this standard. Now it's a burn candle. You can see itself. आप इसको देख सकते हो everyone. You can see this candle here. ठीक है, सब ध्यान से देखो. Everyone look here. सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए. Everyone pay attention. So what I'm going to do, as I told you, it was your homework, but you haven't done this. So I'm doing it here right now. So I have this baking powder. Okay. So you can see here. मैं इसके कैंडल के चारों तरफ यहाँ पर जो रिम है ऊपर, ये देखो, यू कैन सी मैंने ऊपर यहाँ पर डाल दिया. ठीक है, इट्स हेयर. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये मेरे पास देखो विनेगर है. आई एम यूजिंग विनेगर हेयर. ठीक है, आई विल एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस इन दिस. ठीक है, इसमें कुछ ड्रॉप्स डालूंगी मैं इसकी. सो यू विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. आप खुद देखोगे कि क्या होएगा. सो आई एम गोइंग टू एड फ्यू ड्रॉप ऑफ दिस. सो यू कैन सी. किसी को दिखा कुछ? डिड यू नोटिस क्या हुआ? Can any one of you tell you? Because this reaction you already learned in the class 7th also, in acid base also, in chemical change also. What happened now? क्या हुआ है? Can any one of you tell me what happened right now? कौन सी गैस निकली इस रिएक्शन से कि ये जो कैंडल है बंद होगी? CO2. Yes, CO2. So when baking soda reacts with vinegar, it release gas that is carbon dioxide and that extinguish this fire. जो भी fire थी इसमें उसको बंद कर दिया उसने. ठीक है, so that is about this. So it's a natural fire extinguisher. और इसी कारण से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सटिंग्विशन के लिए यूज किया जाता है. इट कैन बी इन ड्राई फॉर्म. ठीक है, आइस कोल्ड फॉर्म में भी हम इसे यूज करते हैं. नाउ टेल मी, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल. सपोज दिस इज, ये यहाँ पर दिया देख सकते हो, इसमें तेल है. ठीक है, सपोज कर लो इस तेल में आग लगी है. ठीक है, ऐसे एकदम से नहीं लगेगी इसका, क्योंकि हमें टेम्परेचर बहुत राइज करना पड़ेगा. ओनली देन इट कैन कैच फायर. ठीक है, ये कैच नहीं करेगा फायर अपने आप से. ठीक है, सपोज दिस इज कैचिंग फायर. ये जो तेल है इसने फायर कैच कर ली. लेट्स एज्यूम. ठीक है, इसको एज्यूम करते हैं. अभी जो अगर फायर लगी है, सो व्हाट डू यू डू? क्या इसमें पानी डालेंगे आग बुझाने के लिए? कैन वी ऐड वाटर इन दिस? यस और नो? अगर तेल में आग लगी है, लाइक यू आर कुकिंग समथिंग, यू आर फ्राइंग समथिंग, कुछ चीज आप फ्राई कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आपको जो है उसके लिए वाटर यूज करना चाहिए टू एक्सटिंग्विश दैट? No. व्हाई सो? यस, यू आर राइट, बट व्हाई सो बेटा? Oil will raise above the water and still it will burn. Yes, that's right. Even you must have seen news also कि
जो पानी का पेट्रोल का जो टैंक होता है, शिप कई बार कैरी कर रही होती है ना, सो वो जो है कई बार डूब जाता है या फिर वो उल्टा हो जाता है। सो पेट्रोल चारों तरफ होता है और बहुत रेयर केसेस में यू हैव सीन कि आग भी लग जाती है। सो पानी तो सबसे ज्यादा समुद्र में ही है, बट स्टिल दैट इज नॉट एबल टू एक्सटिंग्विश दैट फायर बिकॉज oil is above the water. So I'll show you that also. I'll show you an activity also that you can do at your home also. So just give me a minute. I'm coming. So now here I'm going to show you the magic. ठीक है, सबको एक मैजिक दिखाने वाली हूँ. So again I need your attention here. ठीक है, सबने यहाँ पर ध्यान से देखना है. So this is the activity that you can do at your home. You can make your water candle. ठीक है, आप अपनी वाटर कैंडल खुद बना सकते हो. सो यू कैन से दिस इज वाटर ओनली. यहाँ पर इस पे सिर्फ पानी ही मैंने डाला है, नथिंग एल्स. ठीक है, लेट मी रिमूव दिस. ठीक है, सो इट इज हैविंग ओनली वाटर. ये देखो, what I'm going to do, I'm going to add some water, sorry, mustard oil. सरसों का तेल मैं इसमें डालूंगी. एज वी नो इट इज नॉट गोइंग टू मिक्स विद द वाटर. देखो वाटर के साथ मिक्स नहीं हुआ. इट फॉर्म्स इट्स सेपरेट लेयर. उसने अपनी एक अलग सी लेयर बना ली अबव द वाटर. एज आई टोल्ड यू, जो पेट्रोल वाला एग्जांपल था यू हैव सीन. ठीक है, तो उसमें भी ऐसे ही होता है. दे मेक देयर ऑन और यू कैन से सेपरेट लेयर अबव द वाटर. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक अ मैजिक कैंडल हियर, वाटर कैंडल. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज द विक दैट आई एम मेकिंग. ठीक है, बत्ती बना रही हूँ मैं इसकी. एंड आई एम गोइंग टू ऐड दिस इन दिस. ठीक है, मैं इसको इसमें अभी ऐड कर दूंगी. सो ये देखो, दिस इज हियर. ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया इसको. ये देखो, जैसे जस्ट लाइक दिया. ठीक है, दिस इज व्हाट आई डिड. एंड यू नो, पानी है सारा नीचे. ठीक है, बट वी एज्यूम, हमें क्या लगता है, बट वी एज्यूम कि ये तो जलेगा नहीं क्योंकि पानी है. बट इट विल बर्न एंड इट विल कंफर्म अस दैट थिंग जो हम अभी बात कर रहे थे. ये देखो, इट विल बर्न. देखो ये जल रहा है, ऑल दो नीचे सारा पानी है. व्हाई इट इज बर्निंग, सेम रीजन जो हम कुकिंग के लिए भी बात कर रहे थे. अगर कुकिंग करते हुए तेल में आग लग जाए, अगर हम अब इसमें पानी डालें, लेट्स सी, अगर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ अगेन, क्या ये आग बुझेगी? सी, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. कुछ नहीं हो रहा, तेल ऊपर अपने आप वापस आ रहा है. सेम थिंग विल हैपन जब अगर तेल में आग लगी हो और वी आर एडिंग वाटर इनटू दिस. तो वो क्या होगा, तेल तो ऊपर ही रह रहा है, सो इट विल कंटिन्यू बर्निंग, वो जलता ही रहेगा. लेकिन जो हमारा, अब हमने इसको बुझाना है, व्हाट वी कैन डू, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वी कैन डू टू थ्री थिंग्स. ये देखो, एक, आई हैव अ ब्लैंकेट. या तो मैं इसको ब्लैंकेट से कवर कर दूं. सी, बुझ गया. ठीक है, क्यों बुझ गया, क्योंकि इसने ऑक्सीजन की सप्लाई इसकी रोक दी, कि ऑक्सीजन इसको नहीं मिली. सेकेंडली व्हाट वी कैन डू, आपके पास अगर बहुत सारी मिट्टी है, रेत है, सो यू कैन ऐड दैट ऑल्सो कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई. एंड थर्ड, इफ यू हैव, अगर आपके घर में कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर है, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो. इज इट क्लियर टू एवरीवन कि हमें कहां पर पानी यूज नहीं करना, जहां पर तेल है, जहां पर ये जो है इस पे अगर आप करोगे. सेकेंड थिंग, क्या अगर इलेक्ट्रिक शॉक के कारण घर में आग लगी हो या कहीं भी आग लगी हो, डू यू थिंक वी नीड टू एक्सटिंग्विश दैट फायर यूजिंग वाटर? क्या वहां पर हमें पानी यूज करना चाहिए? Ma'am, no. वहां पर नहीं, क्यों? Ma'am, because water also conducts electricity. Yes, water conduct electricity. You will get electrocuted. हमें जो है करंट लग सकता है because of that. ठीक है, जैसे ही आप पानी डालोगे, what is going to happen? एक तो और स्पार्क होएगा क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. सेकेंडली,
you will get electrocuted, मतलब आपको electric shock लग सकता है. So in that case also you can use carbon dioxide वाला fire extinguisher or you can use sand in that case. ठीक है? So this is about fire extinguisher. Is it clear to everyone how it works? And where we should use water wala and where we should carbon dioxide you can use everywhere. ठीक है? Even in that case also you can use. But water वाला case कहाँ पर use हो सकता है? जहां पर फर्नीचर में आग लगी है, जहां पर जो है अगर हमके बिल्डिंग में आग लगी है, जहां पर जो है जंगल में आग लगी है, फॉरेस्ट फायर, सो देयर यू कैन यूज. बट वी आर जहां पर रसोई में अगर हम बात कर रहे हैं, जहां पर वी आर सेइंग कि इट इज ड्यू टू द ऑयल और वी आर सेइंग ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, सो वी कैन नॉट यूज वाटर देयर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? So that's fine. So we will firstly discuss about I think I have given you 2 questions for the homework also. Reason assertion 16, 17 and 23rd. Yes, if I am not wrong. Because I No. बेटा मेरे 23rd तो कंफर्म है. आई हैव गिवन यू, क्योंकि ये वो वाला क्वेश्चन है जो कि हमने ये पेपर कप के साथ किया था, वाटर फील्ड एंड विदाउट वाटर फील्ड. आई हैव गिवन यू होमवर्क दिस कि अपने आप करके लाने, क्योंकि यू ऑलरेडी डिड दिस और यू हैव सीन दिस प्रैक्टिकली. ठीक है? सो आई हैव गिवन यू दिस एज होमवर्क. Okay. If you haven't done, it's okay. We will try to do it right now. मैम आपके मॉड्यूल में और हमारे मॉड्यूल में नंबरिंग चेंज है. Yes, बेटा. मैम आपके मॉड्यूल में और हमारे मॉड्यूल में नंबरिंग चेंज है. Yes, बेटा. I know. मैंने तभी मेरे उसमें जो नंबरिंग है, it is 22nd. आपके उसमें मैंने उस दिन कंफर्म की थी. किसी बच्चे ने कहा था 23rd है ये वाला क्वेश्चन. Okay. So meanwhile, let's take questions. ठीक है? सो रीजन असर्शन पे आ जाते हैं. फर्स्ट इज फॉस्फोरस. अब ये वाला कौन सा क्वेश्चन है देख लो. मेरे उसमें 17 है. इट्स इन योर वर्कशीट इट शुड बी 18 आई थिंक. यस, इट्स 18. Yes. So assertion is saying phosphorus burns in air at room temperature. Is it right? Yes. क्या दोनों phosphorus, we have 2 phosphorus बेटा. एक white है and second is red. So it is not clear which phosphorus they are talking about. कौन सी phosphorus की बात कर रहे हैं? Like white burn itself, जो हमने इसमें क्वेश्चन भी लिया था, I think which question it was. I think 11th क्वेश्चन था कुछ ऐसा. अब आपकी वर्कशीट में कौन सा है? So in that, so white phosphorus burn itself, red doesn't. Red जो है माचिस के लिए, माचिस में यूज होता है. Like if you can see, रेड कलर का क्यों है? रेड phosphorus है यहाँ पर. ठीक है? तो उसको फ्रिक्शन चाहिए होती है, उसको रबिंग चाहिए होती है टू गेट द इग्निशन टेम्परेचर. सो वी कैन से इट्स फॉल्स. Now coming to, it is an example of spontaneous combustion. Again, it's not clear. Spontaneous combustion होती अगर ऊपर लिखा होता white phosphorus. White phosphorus में अगर जो word है अगर वो डाल दिया जाता then it would be complete. So again we can say it's false. Both are false. ठीक है? Now coming to 18th, या फिर आपके उसमें 19th होगा. Assertion. Combustion is a chemical process that involves a rapid combination of a fuel with oxygen, resulting in release of heat, light, and transformation of new substances. Is it right? Yes. So, Excuse me, ma'am. yes, beta. Ma'am, there is no option for assertion reason if both are false. There is no option if both are false. Okay, अपने आप लिख लो भी. False आपको खुद को पता लग गया. Okay. Then assertion is true. Coming to reason. Reason, during combustion, the fuel undergoes oxidation and the energy released in the form of heat and light. Is it correct? मैम ये क्वेश्चन नहीं है बट ये रीजन क्यों है. अच्छा, आपके है नहीं वाला? ओके.
चलो लीव दिस क्वेश्चन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके उसमें है, इट इज डिफिकल्ट टू लाइट अ कैंप फायर ऑन ए रेनी डे। Yes. तो हम खुद भी करके भी देख सकते हैं, वी कैन डू दैट ऑल्सो। सो इफ आई टेक वन माचिस, ठीक है मेरे पास माचिस है, इसको अगर मैं गीला कर दूं, ठीक है, इसका वुडन पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द वुडन पार्ट ओनली, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, आई एम गोइंग टू मेक इट वेट, ठीक है, मेरे पास ये पानी है, मैंने इसको अच्छी तरह डुबो दिया। ओके, इट्स नाउ टोटली इमर्स इन दिस वाटर। एंड सेकेंड इज ड्राई, कंप्लीटली ड्राई, ठीक है। सो लेट्स सी विच विल बर्न फास्ट, कौन सी वाली जल्दी जलेगी। एक्चुअली मेरे हाथ ही सारे गीले हैं तो इट्स नॉट बर्निंग। So I need to burn candle to show you this. So let's come to the activity table. ठीक है? So I'll show you. Okay, it's again extinguished क्योंकि अभी भी baking soda and water was there. Sorry, vinegar was there in this candle. So I'll show you. जो आपको फायर एक्सटिंग्विश वाला मैंने करके दिखाया ना, बिकॉज ऑफ दैट इट्स नॉट बर्निंग नाउ, क्योंकि अभी भी इसके अंदर बेकिंग सोडा एंड विनेगर इज देयर। सो let me clean it first. Let's see if it's work or not. ठीक है, otherwise it's taking so lot of time to burn. So you can see कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी इसमें बन रही थी, रिएक्शन हो रहा था, so that's why it took so long. So yes, move ahead with our experiment. So I was telling you, so हमने एक माचिस की जो तिल्ली थी, मैच स्टिक, जिसका वुडन पार्ट था, उसको मैंने पानी में डुबो दिया था, ठीक है। सो लेट्स सी, एक बोल लूंगी मैं, ओके, आई शो यू बोथ साइमल्टेनियसली, पर एक ही मेरे पास ड्राई है। सो दिस वन, ये जो भी आपको दिखा रही हूँ, दिस इज वेट एंड दिस इज ड्राई, दिस इज ड्राई, ड्राई एंड दिस इज वेट। सो लेट्स सी विच विल बर्न फास्ट। दोनों को ही मैंने कैंडल के अंदर, कैन यू सी, इसने, इसको टाइम लगा वेट वाले को, और इसको जलने में एकदम से वो जल गई। सो सेम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। सो नाउ आई थिंक यू कैन रिलेट विद द क्वेश्चन। नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज, wood burns, it is difficult to light a campfire on a rainy day. So what is the reason of this? Ma'am, because moisture prevents the Yes, तो मॉइस्चर, जैसे भी हमने वुड वाला करके देखा, सो उसमें मॉइस्चर था, पानी था, ठीक है। सो मॉइस्चर इन द वुड प्रिवेंट इट फ्रॉम रीचिंग इट्स इग्निशन टेम्परेचर, सो वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन फॉर combustion is missing. So we can say both are correct. Yes, both are true. Reason assertion both are true. Now coming to next assertion reason. अब देखो ये आपके उसमें है या नहीं है। Wood burns more slowly than gasoline. Yes, ma'am. So wood burn more slowly than gasoline. Is it true? True. So gasoline is a volatile liquid with low ignition temperature and large exposed surface area for vapor formation, while wood is a solid with tightly bound molecules and less surface area available for combustion. Is it true? True. Yes. So both are true. So
So now critical thinking question लेते हैं. So I think you have next is critical thinking question. So let's say you are provided with 3 watch glasses containing kerosene, alcohol, paper, wood, plastic, and water respectively. Suppose you bring a burning matchstick near these material one by one. Which material will catch fire instantly and why? What do you think? Out of this, which will catch fire instantly? Alcohol. Alcohol, yes. Why? Ma'am, because it has low ignition temperature. Yes, that's the reason. कोई भी चीज अगर फटाफट फायर कैच करती है, it means its ignition temperature is very low. ठीक है? That's the reason. Now next question is assertion and reason in your worksheet. देखो आपके उसमें यही है, we can prepare tea in a paper cup. It's 24th question. So after this क्या क्वेश्चन है critical thinking के बाद? No more question. Tina was cooking in the kitchen when Okay, Tina was cooking in the kitchen when suddenly the cooking oil caught fire. She panicked and poured water on the fire. Was it the right thing to do? अभी हमने किया था. Is it right? No. No, it's not. Why or why not? अगर ये चीज ठीक नहीं थी, क्यों नहीं थी? Why it was not correct? And because oil always floats on water, that's why it's not. So because it was the oil that caught fire, and by pouring water, it is not going to extinguish fire because oil doesn't dissolve or mix with the water. It will float on the surface of water and continue burning. ठीक है? That's the reason. What should she have done to extinguish fire? तो मैंने आपको 2 चीजें बताई थी अगर घर पे हो. So we can either cover it with a blanket or we can either add or pour some sand अच्छी क्वांटिटी में. ठीक है? वो हम ऐड कर सकते हैं. That will cut off the oxygen supply. ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें से खत्म हो जाएगी. Next question. An electrical fire broke into a warehouse. A fire engine rushed to the spot. A junior fireman rushed to the spot with a water hose to extinguish fire. His senior stopped him and asked him not to use this method. Why do you think the senior stopped the junior from using a water hose? Which type of fire extinguisher do you think the senior would have used to put off the electrical fire? So, Ma'am, because water is a good conductor of electricity and it can give the electric shock to the person handling water. That's nice. That's nice. Wonderful. So, because water is a good conductor of electricity, as soon as he's used this water, he will get electrocuted. Okay? So that's the reason. Now you have case-based question after this. Case-based. assertion reason. Assertion reason है. अच्छा एक वो वाला we can prepare tea. Yes. The question I think we have done already. Practically हमने उस दिन करके देखा था paper cup use करके. So we can prepare tea in a paper cup and it doesn't catch fire. Is it true? And true. Yes, we can make it. जब तक वो पानी evaporate नहीं हो जाएगा, जब तक पेपर कप का ignition temperature नहीं आ जाएगा, it will not burn. ठीक है? Reason: the water in the paper cup absorb the heat and prevent the temperature of the paper from reaching its ignition temperature. So this is also right. ठीक है? So now let's take case-based question. Ravi was curious to understand how a matchstick works. He observed that when he stuck a matchstick against the side of the matchbox, it produced a fire flame. He noticed that head of matchstick caught fire instantly, while the wooden stick burns slowly. He also learned that tip of the matchstick contain a chemical that helps in easy ignition, while the wooden part supports slow and continuous burning. Why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature even though it is combustible substance? Its ignition temperature is higher than room temperature. Yes, that is the correct. And also a combustible Both A and B. both A and B. तो इसका both A and B आएगा. Yes. Coming to second question, why does the matchstick catch fire when it is rubbed against the matchbox? It generates heat due to friction reaching the ignition temperature. Yes, it's B. तो ये मैंने भी स्टार्टिंग में बताया भी था कि वो जो मैच बॉक्स है उसका.
Third, which chemical reaction occurs when a matchstick is ignited? B option. Yes, potassium chlorate reacts with red phosphorus to produce heat and flame. So potassium chlorate is in the tip, और जो match box का जो हमारे dot बना होता है, that is having red phosphorus. ठीक है? So it's B. Now coming to the match the following. So which one is the correct option? It is related to your third question only. जो third question अभी क्या उसी से related. Yes, G section से boys, middle row, first bench. Yes, any answer from you? But I can see only E and B are actively participating. A option. Yes, it's A. Potassium chlorate and antimony trisulfide. Matchbox में क्या होता है? Red phosphorus. That's right. Correct, beta. That's good. So everyone, so that's the correct answer. जो matchstick है, we say this is a matchstick. जो उसका ये टिप होता है, इसमें क्या होता है? पोटेशियम जो पाउडर सा होता है, स्टिकी सा, क्लोरेट प्लस एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और जो हमारा मैच बॉक्स होता है उसका जो ये डॉट डॉट रफ सरफेस होता है, दिस रफ सरफेस, इट इज हैविंग रेड फॉस्फोरस. ठीक है. So next है, which of the following shows spontaneous combustion? Spontaneous मैंने उस दिन पिछली बार आपको बताया था, spontaneous मतलब अपने आप से, you are not doing anything, it is happening itself. So क्या होगा इसका आंसर? कौन सा वाला फॉस्फोरस अपने आप जल जाता है? You don't need to burn it. White phosphorus. Yes, white phosphorus. क्योंकि red phosphorus is here, so you can see it's not burning itself. ये देखो मेरे हाथ में पड़ा है डब्बा, लेकिन it's not burning. ठीक है? But if I would have that white वाला, ठीक है? So it would have burned. ठीक है? वो जल चुका होता अभी तक. ठीक है? So now coming to next topic, flame. तो flame में अभी हम वर्कशीट के थ्रू नहीं जाएंगे. We are not going through the worksheet. Yes, बेटा. क्वेश्चन ही है ये. Which question? Yes, someone is saying something. Yes, बेटा क्या कह रहे थे? जो व्हाइट फॉस्फोरस वाला क्वेश्चन था. हाँ जी, क्या हो गया? वो क्वेश्चन नहीं है असाइनमेंट में. आपके उसमें नहीं है? Okay, leave it then, no problem. ठीक है? Not a big issue. Leave it. So now सब मेरी एक्टिविटी टेबल पे वापस आ जाओ. Excuse me, ma'am. बेटा, Ma'am, it is 13th question. it is 13 question. Okay. Everyone, please mark it. It's 13 question. अब ये देखो, everyone, pay attention here. Now you can see here, candle is burning. Yes, candle is burning. Can you see this? Burning candle? Yes, सबको. Okay, you can see that's really nice. Now here, ये सबने ये भी देखा होगा अपने घर पे. You must have seen this धूप और अगरबत्ती भी होती है ना? अब मुझे बताओ, they both are burning? Yes, क्या ये दोनों जल रही हैं? Both are burning? Yes. But do they look same? क्या वो सेम लग रहा है आपको? If both are burning, yes, कुछ डिफरेंस है या कुछ सिमिलैरिटी है इसमें? बताओ. What is present in the candle and what is absent in this incense stick, or we can say dhoop? Yes, Flame. flame. So that's flame. So you can see it's also burning. This is also burning. The difference is this flame. You can see this flame is present in the candle, but it is not present in this dhoop. What is the reason?
What is the reason? The reason is, if you look here carefully in the candle, ठीक है, अगर कैंडल में अगर बेटा ध्यान से देखें, आप कैंडल में इफ यू नोटिस ये जो विक है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये विक, ठीक है, ये काली बत्ती जो है, ठीक है, सो यू कैन सी इसका साइज डिक्रीज नहीं होता एज कंपेयर टू द दिस वी कैन से कैंडल और वैक्स. यस, सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर जो ये वैक्स है, अब बताओ कब से ये हमारी जो, अगर हम लेट्स सी हियर, ओके आई शो यू फर्स्ट थिंग, यहाँ पर देखो, अब मेरे पास एक कॉटन की विक है, आई हैव दिस, देखो कॉटन की एक मैंने विक ली है, ये बत्ती ली है, अगर मैं इसको जलाऊं, देखो वही बत्ती जो सेम हमारी कैंडल के अंदर है, सी ये एकदम से जलेगी और खत्म हो जाएगी, यू कैन सी इट्स बर्न एंड वेनिश, खत्म, ठीक है, वी कैन नॉट यूज इट. But here in this you can see batti is here, wick is here, but it is not burning as fast as ये जो हमने पहले जलाया है उसकी तरह. Why so? Wet wax of the candle is preventing the wick from reaching its ignition temperature. So who is burning here? क्या जल रहा है यहाँ पर? If it's not the wick, तो क्या जल रहा है यहाँ पर? Wax. So it's the wax. You are correct. It's the wax which are burning here. वो जल रही है, और जब वो जल रही है तो क्या हो रहा है, उसके जलने से जो वेपर है, देखो ये सॉलिड है, पहले वो मेल्ट हो रही है, लिक्विड बन रही है, और इस हीट के कारण जो मोल्टन वैक्स है, यहाँ पर जो ये देखो यहाँ पर मोल्टन है, गीला है सारा, इट इज वेपराइजिंग, मतलब इसके वेपर बन रहे हैं जो उड़ रहे हैं हवा में. दैट्स व्हाई इट्स साइज इज गेटिंग रिड्यूस्ड. बट हियर इन दिस केस यू कैन सी नो मेल्टिंग, कुछ मेल्ट नहीं हो रहा, नथिंग इज मेल्टिंग हियर, ठीक है. सो इन दिस नो वेपराइजेशन, जो हमारा ये है धूप, इसमें कोई वेपराइजेशन नहीं हो रही, जबकि इसमें वेपराइजेशन हो रही है. जहां पर लिक्विड वेपर में बनता है जलने पे, वो हमें ये फ्लेम दिखाता है. जहां पर हमारा जो सब्सटेंस है वो वेपराइज नहीं होता, इट विल नॉट शो अस फ्लेम. सो यहाँ पर हमें कोई फ्लेम नजर नहीं आ रही, देखो मैं पूरा हटा भी रही हूँ, स्टिल यू कैन नॉट सी एनी फ्लेम इन दिस. एंड मोreover दिस इज कंप्लीटली सॉलिड, इट इज नॉट मेल्टिंग, इसमें से हमें कुछ नहीं निकल रहा. लेकिन अगर मैं इस कैंडल को अगर उठाऊं, ओके, सो यू कैन सी इसमें से ये देखो ये वैक्स कैसे निकल के बाहर आ गई, ठीक है. तो इट मीन्स इट हैज सम लिक्विड कंपोनेंट आल्सो. तो लिक्विड है तो इट कैन वेपराइज, इट इज हैविंग नो लिक्विड कंपोनेंट, ठीक है. सो इट इज सीधा ये क्या हो रही है, सॉलिड टू गैस हो रही है, सबलाइम हो रहा है, यहाँ पर सब्लिमेशन हो रहा है. सो नो वेपराइजेशन. सो सिंपल, धूप और कैंडल को याद रखो, इन कैंडल वेपराइजेशन इज हैपनिंग, एंड जहां पर वेपराइजेशन, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वेपराइज होगा, दैट विल शो अस फ्लेम. जो नहीं होगा, जो वेपराइज नहीं करेगा, जिससे वेपर्स नहीं बनेंगे, और वो मोस्टली कौन होते हैं, सॉलिड कंबस्टिबल सब्सटेंस. सॉलिड, ये सॉलिड है, कंप्लीटली सॉलिड है. इट इज सॉलिड बट इट इज मेल्टिंग इनटू लिक्विड, एंड दैट लिक्विड इज वेपराइजिंग. इज इट क्लियर? Yes. ठीक है. So that is the difference between flame, और यहाँ पर भी दोनों जल रहे, both are burning, but one with a flame, one without a flame. Rest we will do tomorrow, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है. So we will continue tomorrow क्योंकि I think your time is over 9:54 हो गए. So with this, bye everyone. Bye, ma'am. Bye everyone.